हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसे ऑन यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो चलिए अपने एसे को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने एसे की आउटलाइन, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी इंट्रोडक्शन की, सेकंड आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, थर्ड है लेसन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड फोर्थ है हेडिंग हमारी गेम्स, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स्थ है ट्रेड यूनियंस एंड सेवन्थ है हेडिंग हमारी लास्ट कंक्लूजन की। तो चलिए अपनी फर्स्ट हेडिंग देखते हैं इंट्रोडक्शन। Napoleon Bonaparte was a famous French emperor. He believed in the policy of divide and rule. In the same way, Kautilya, the teacher of Chandragupta Maurya, said, "United we stand and divided we fall." This is why he asked Chandragupta Maurya to annex small territories and make India united. Next heading देखते हैं, importance of unity. Everyone knows well that unity is strength. The farmer's son could not break the handle of his sticks, but when the bundle was united, each stick was broken easily. This points out the importance of unity. If we are united, none can harm us. नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, लेसन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री पॉइंट आउट दैट foreign came to India and looted it when it was divided. Difference between Prithviraj Chauhan and Jaichand led to ruin. Mir Jafar's betrayal made the English the lord of Bengal. In the reign of Samudragupta and Aurangzeb, who had too courage to attack India, Sardar Patel united India and made it stronger than before. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गेम्स. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन गेम्स इज यूनिटी. व्हेन अ टीम इज यूनाइटेड इट गिव्स गुड फाइट टू इट्स राइवल. व्हेन ईच प्लेयर प्लेज ओनली टू शाइन हिमसेल्फ द टीम इज बाउंड टू लूज द मैच. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फैमिली. इफ़ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और अ बिजनेस फर्म आर डिसिप्लिन्ड and united, it prospers. But when its members are disunited, the family or the firm goes to dogs. The result is disaster. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्रेड यूनियंस. मॉडर्न एज इज़ एन इंडस्ट्रियल एज. मिल ऑनर्स कैन वर्कर्स लेजी एंड वर्थलेस. दे समटाइम चूज द easy path to lock out, to put pressure on the workers. The workers call them blood-sucking brutes. They go on strike for higher wages. Generally, they succeed if they are united, but if they are divided, they lose the game. Some of them face the torture of unemployment. नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपने कंक्लूजन की. दस इट इज़ क्लियर दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड डिवाइजन आर is a curse. If we want to see our country strong and prosperous, we should do our best to remain united. This is why Gandhi ji did his best to see Hindus and Muslim united. तो इसी के साथ हो जाता है हमारा ऐसे कंप्लीट. आई होप सो आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड.